we will going to learn a new topic, that is homogenization. So in this topic we will discuss about the theory of homogenization, function of the homogenizer, components of the homogenizer, what is the requirement of the homogenizer, and why we do homogenize milk in the dairy industry, or why dairy industry uses homogenization, what is the purpose of the homogenization. So homogenization is basically a process of breaking the fat globules below 2 microns. We know that milk consists of fat, protein, lactose, water, and fat is present in emulsion form. Fat is present in emulsion form. Fat is surrounded by a protein membrane which keeps the fat globules in emulsion state in a water or in a milk. Okay, so which is called as a MFGM, fat globule membrane, milk fat globule membrane, and concentration of fat is around it ranges from 3 to 6% depending upon the breed. So this fat globules, the size of the fat globules ranges from 1 micron to the 20 microns. They are varying numbers. Some may be in 1 micron, some may be 2 microns, some may be 10 microns, and some having the diameter of the 20 micron. It depends upon the type of milk and the breed also. So in the process of homogenization, we break these fat globules below the size of 2 micron. Why below the size of 2 micron? Because below 2 micron the rise of the fat globules on the top of the milk or top of the surface of the milk will be delayed by a certain time. Okay, you know that you have experienced many times, and when you keep a milk as such on a table, and after some time you notice that there will be a formation of cream on the surface of the milk. So this thick portion of fat which is called as cream can be found on the surface of the milk. So that is the called as creaming or a cream formation. So what homogenization exactly do in this case? It reduces or delay the cream formation. It delays the formation of cream on the top of the milk surface. So it is basically a method of delaying of a cream formation by reducing the size of the fat globules. Because we know, if you have learnt about the, or if you know the Stokes law, you know that this cream formation is directly proportional to the size of the fat globules. If more is the size of the fat globules or a particle, it will rise quickly, and vice versa. If size of the fat globules or any particle is less, it will take longer time to rise at the size of the at this surface of the liquid or a product or a milk also. So there is a scientist called Gauguin who discovered, a French scientist who discovered this homogenization process in 1899. So some 100 years back he invented this process known as homogenization process, and this primarily used for delay in creamline formation in milk. Okay, so in this process milk is forced through a small passage at high velocity. So homogenization is a process in which milk is forced through a small orifice or a small passage through a wall
and by the shearing action, milk fat globules disrupted into a small globules or a much smaller ones, and the size of the fat globules reduces below 2 micron. So for this understanding, we first should know what is Stokes law and what are the different factors which is important or which cause to affect the creaming or cream formation or cream line formation. So let's have a video by which you can understand what is Stokes law. Could you pass the yogurt, please? Mum, do you know what these products have in common? No, what? I've learned about something called separation. Separation is an important process in dairies that makes many dairy products possible. I'm going to tell you why. Okay. Separation is actually a natural process. Imagine if we milked a cow and let the milk stand. It would eventually separate by itself into cream and skimmed milk. This is because the fat globules, that's cream, are lighter and the remaining milk is heavier. The milk has been separated by gravity. How quickly this happens depends on a few things. Right. Look at these dollops of honey. Their size will affect how fast they move through a liquid. A big dollop will drop to the bottom faster than a small one will. So, Mum, in the same way, when milk separates by gravity, the heavier skimmed milk is held down by gravity, while the cream, which is lighter, floats to the top. The speed a particle travels also depends on how dense it is, that means compact, compared to the liquid around it. A particle that is more dense travels more quickly to the bottom of a liquid than a less dense particle. I'm going to show you what I mean. If we took 2 spoons, one wooden and one metal, the denser metal spoon would fall through the tea faster than the wooden one, which is less dense. So you see, Mum, the combination of size and density of a particle will affect the speed a fat globule moves through milk during separation. Okay, I'm with you. Now imagine if the liquid the particle is travelling in was thicker, like yummy yogurt. The thicker the liquid is, the more time it takes for a particle to travel through it. Because there is resistance in the liquid, which is also known as viscosity. Do you see? The speed a particle travels through a liquid depends on several things. The size of the particle, its density, and the viscosity of the liquid it's travelling through. These all come together in a really cool formula known as Stokes' law. It describes the speed a particle travels through a liquid. So, if we look at Stokes' law, we can see that if a particle is very large and dense compared to the liquid it is in, the speed of separation will be faster than if the same particle was travelling in a thick liquid, such as yogurt. You see? It's cool, isn't it? That's most of Stokes' law, but check this out. Stokes' law is good for explaining what happens when we leave milk to separate under the Earth's gravity. It's a slow process, but there is a way to speed it up. Okay. Imagine if we spin the beaker round like this. Centrifugal force will speed up the journey of the cream through the liquid. The milk separates here too. The lighter fat particles, the cream, are at the top, while the heavier skimmed milk is at the bottom. So centrifugal force also affects separation, Mum, and we can add it to the other factors in Stokes' law. The same things happened as with separation by gravity, but it's happened much faster thanks to centrifugal force. The dairies that produce the milk we buy are using Stokes' law in big centrifugal separators. They separate the cream from the milk, which are then mixed back together in the right amounts,
depending on the type of milk, or yogurt, or cheese, or whatever dairy product they want to make for us. So, Mum, now you know some of the science behind the stuff on our breakfast table. Don't you think that's cool? So that is called a Stokes law. So the formation of cream depends upon the density of the fat globules, the diameter size, and the viscosity of the fat globule, or the medium viscosity of the milk. So this Stokes law is also applied in cream separation. So there are cream separators which separate the cream from the milk. So in the homogenization process, we basically delay the cream formation by reducing the fat globule size below 2 micron. Because why we homogenize the milk? Because in it has several advantages. First of all, it will delay the cream formation, it increases the surface area, it reduces the curd tension, and it substantially used in the process of ice cream mix formation or ice cream mix preparation, because it homogenizes the whole mass of the ice cream mix uniformly, by which the quality of the ice cream mix improved substantially, and you will get a better ice cream mix upon freezing out. So there are the several advantages of the homogenization. So base so basically it is used for the disruption of the fat levels and to delay the cream formation, because some customer may not like the cream line formation when they purchase the milk, and they tear the milk pouch, and if they see the cream they will not like those cream formation. So to avoid that circumstances, generally dairies apply homogenization. Some may apply, some may not apply. If you homogenize the milk, you need to mention the homogenized milk. If you don't, you don't need to write the homogenization. So that is all about the introduction of the homogenization. So in figure you can see that this is the unhomogenized or a raw milk, okay, and when it get homogenized, the size of the fat globules get reduced below a 2 micron. This can be seen by using microscope also. So here you can see that this is the homogenized milk, and the small globules are the fat globules which are below the 2 microns. Some may be 4 5 microns also, okay, but generally all are the or below, all my fat globules are below 2 micron. So this is the actual image of the fat globules seen under the light microscope. So what is a homogenizer? So homogenizer is an equipment which is used for the process of the homogenization. So it is basically a pump, a high pressure pump, which forces the milk through a wall which is having a narrow gap. ये बेसिकली एक हाई प्रेशर पंप होता है, आपने पंप के बारे में पढ़ा है, ओके। सो ये भी एक तरह का हाई प्रेशर पंप होता है जिसमें बहुत सारा प्रेशर हम डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं, और उस प्रेशर के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारा जो मिल्क है, ये हमारा कोई आइसक्रीम मिक्स भी है, उसको हम क्या करते हैं, उस मिल्क को फोर्स करते हैं थ्रू अ वॉल, एक वॉल होता है उसमें उसको फोर्स करते हैं
बाय, और जो वॉल होता है उसकी जो ओपनिंग्स होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, स्पेसिंग होती है उसके अंदर वो बहुत ही स्मॉल होती है। और हम किसी चीज़ को अगर नैरो गैप से प्रेशराइज कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ शेयरिंग एक्शन होगा, और शेयरिंग एक्शन होने से क्या होगा कि साइज ऑफ दी फैट लेवल्स जो है वो आपकी क्या होगी, डिसरप्ट हो जाएगी, और साइड फैट लेवल्स क्या होंगे, ब्रेक हो जाएगी। फैट लेवल विल ब्रेक इनटू अ स्मॉलर वंस। तो वो गैप इतनी होती है कि फैट लेवल की साइज अपने आप ऑटोमेटिकली 2 माइक्रोन के नीचे आ जाती है। So that is the fundamental of the homogenization. So it is basically a positive displacement pump. Okay, अपने को पता है what is positive displacement pump. So एक positive displacement pump होता है जिसमें शाफ्ट्स लगी होती हैं, जिसके थ्रू हम मिल्क को हाई प्रेशर पे फोर्स करते हैं एक नैरो वॉल से या स्पेस से, जिससे फैट मिल्क की साइज रिड्यूस हो जाती है बिलो 2 माइक्रोन। तो एक फिगर है, एक होमोजेनाइजर का स्केच है, आप इसमें देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले एक होती है मोटर। ओके, मोटर किस लिए चाहिए होती है, ताकि वो शाफ्ट को रोटेट कर सके, ऑपरेट कर सके। तो इसमें सबसे पहले होती है मेन ड्राइव मोटर, दिस इज द मेन ड्राइव मोटर। ओके, नंबर 1। नंबर 2, वी बेल्ट ट्रांसमिशन। तो ये जो मोटर कनेक्ट होता है एक शाफ्ट से थ्रू अ वी बेल्ट। तो ये मोटर है, ये वी बेल्ट है, और यहाँ पे ये शाफ्ट लगा हुआ है। तो ये जो मोटर है ये रोटेट करेंगे शाफ्ट को थ्रू अ वी बेल्ट ट्रांसमिशन, इट इज कॉल्ड अ पावर ट्रांसमिशन। फिर इसमें होता है प्रेशर इंडिकेशन। तो यहाँ पे एक डिजिटल प्रेशर इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, दिस इज कॉल्ड अ प्रेशर इंडिकेटर। देन नंबर 4 इज अ क्रैंक केस, दिस इज अ क्रैंक, और यहाँ पे केस होती है लगी हुई या कवर होता है जिसे हम क्रैंक केस कहते हैं। नंबर 5 इज दी पिस्टन्स। तो इसमें 1 2 3 पिस्टन्स है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिप्लेक्स होमोजेनाइजर। व्हाट इज कॉल्ड ट्रिप्लेक्स होमोजेनाइजर, 1 2 एंड 3। 3 पिस्टन्स होने की वजह से क्या होता है कि इसके एडवांटेज क्या है कि एक कंटिन्यूस प्रेशर यहाँ पे बना रहता है हमेशा, ताकि मिल्क अच्छे से फोर्स हो सके थ्रू अ नैरो स्लिट वॉल। देन 6 इज द पिस्टल सील कार्ट्रिज। तो यहाँ पे सील कार्ट्रिज होती है, ओके, इन पिस्टन्स में, जो कि क्या करती है, मिल्क लीक नहीं होता इस पिस्टन में। ओके, नंबर 8 इज दी वॉल्स। तो यहाँ पे एक्चुअली वॉल्स होता है, ओके, इस पोजीशन पे आपके वॉल लोकेट होते हैं। तो इसमें दो तरह के दो वॉल, तो अगर सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन होगा तो उसमें एक ही वॉल लगा होगा, और अगर 2 स्टेज होमोजेनाइजेशन है तो उसमें 2 वॉल्स लगेंगे। सिंगल स्टेज और 2 स्टेज क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द वॉल। 9 इज द होमोजेनाइजिंग डिवाइस। तो ये हो गया आपका वॉल और ये हो गया आपका होमोजेनाइजिंग डिवाइस। नंबर 10 इज दी हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम यहाँ पे दी होती है, जिसके थ्रू ये सारा प्रेशर जनरेट होता है। दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द homogenizer. So what is a homogenizer? It is basically a positive displacement pump which forces the milk through a narrow opening, okay, and breaks the fat level below 2 micron. So ये है एक जहाँ पे एक्चुअल में वॉल है या नैरो स्लिट जिसे हम कहेंगे, नैरो ओपनिंग, जहाँ पे एक्चुअल में मिल्क फोर्स होता है या जर्नी मतलब प्रेशराइज होता है थ्रू अ नैरो स्लिट। तो यहाँ पे आपका अनहोमोजेनाइज प्रोडक्ट सपोज इधर से प्रेशराइज हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ये हो गया आपकी वॉल सीट, दिस इज कॉल्ड वॉल सीट। और यहाँ पे आके आप देख सकते हो यहाँ पे जो गैप होती है वो जनरली होती है 0.1 mm, इतनी कम यहाँ पे एक गैप होती है 0.1 mm। और ये आपका इज कॉल्ड अ पिस्टन। ओके, ये वॉल का कोई एक पार्ट भी जिसे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे रखा होता है, और फोर्सर इज ऑल्सो कॉल्ड अ
फोर्सर, ये हो गया आपकी सीट हो गई। तो ये प्रेशर को मेंटेन करता है। तो पर्टिकुलरली प्रेशर्स हम स्टैंडर्ड प्रेशर होते हैं 500 psi एंड 2500 psi, इस तरह से। तो सिंगल स्टेज में अलग प्रेशर होता है, डबल स्टेज में अलग प्रेशर होता है। सो यहाँ पे क्या होगा कि आपका रॉ मिल्क जो है या अनहोमोजेनियस प्रोडक्ट है, इस साइड में इसको प्रेशराइज करेंगे और ये जो है ये प्रेशर इस पे मेंटेन करके रखता है। दिस इज कॉल्ड अ फोर्सर। सो फोर्सर मेंटेन्स द प्रेशर एंड ड्यू टू विच क्या होता है कि यहाँ से थ्रू नैरो ओपनिंग्स और नैरो गैप मिल्क विल पास थ्रू। और इस साइड में देख सकते हैं आप यहाँ पे कि फैट ग्रुप की साइज बड़ी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिस्क्रिप्शन हो गया बिलो 2 माइक्रोन और छोटे छोटे फैट ग्रुप्स आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस इज अ theory of is working of a homogenization, how actually homogenization works. So at homogenization the milk is forced through a narrow gap where the fat globules are split. So there are two types of homogenization, that is single stage homogenization and a two stage homogenization. So single stage में क्या होता है कि एक ही बार हम मिल्क को फोर्स करते हैं वॉल से, वॉल सीट से। सिंगल स्टेज में एक ही बार हम मिल्क को पास करते हैं बॉल सीट से, ठीक है, एक ही बार हम पास करेंगे इस डिवाइस से, ओके। और टू स्टेज में क्या होगा कि ऐसे दो डिवाइस या ऐसे दो बॉल्स लगे होंगे। फर्स्ट स्टेज में एक बार गुजारेंगे, सेकंड स्टेज में फिर से उसको उसमें से पास करेंगे, दैट इज कॉल्ड टू स्टेज एलिमिनेशन। तो किस केस में हम करते हैं सिंगल स्टेज एलिमिनेशन? जिसमें अ प्रोडक्ट्स डिमांडिंग अ हाई विस्कोसिटी सर्टेन क्लस्टर फॉर्मेशन। एंड टू स्टेज होमोजेनाइजेशन किस में यूज करेंगे हम? प्रोडक्ट्स विद हाई फैट कंटेंट, प्रोडक्ट्स वेयर अ हाई होमोजेनाइजेशन एफिशिएंसी इज डिजायर्ड। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब फर्स्ट स्टेज से या फर्स्ट वॉल से मिल्क जब पास होता है तो क्या होता है कि देयर आर चांसेस ऑफ क्लस्टर फॉर्मेशन। मिल्क की साइज तो कम हो गई, ठीक है, मिल्क फैट लेवल की साइज तो कम हो गई। बाद में क्या होता है कि वो जो साइज कम होने के बाद जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जिनकी साइज रिड्यूस हो चुकी है, दे ट्राई टू क्लम्प विथ ईच अदर, वो इकट्ठा आने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, क्लम्प फॉर्म्स होते हैं या क्लस्टर फॉर्म होते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो जहाँ पे हमें प्रोडक्ट की विस्कोसिटी ज़्यादा चाहिए होती है उस केस में हम सिर्फ सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन यूज़ करते हैं। और टू स्टेज होमोजेनाइजेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे मतलब कि हमें क्लस्टर फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क में नहीं चाहिए कि जो मिल्क पहले ही ब्रेक हो चुका है वापस से जुड़ जाए, जब उनका कोई क्लस्टर फॉर्मेशन हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि टू स्टेज होमोजेनाइजेशन हम यूज़ करते हैं। तो पहले मिल्क एक किससे गुजरेगा, एक वॉल सीट से, वहाँ पे ब्रेक होगा, फिर उसको हम क्या करते हैं और लो प्रेशर पे थोड़ा क्या करते हैं उसको फिर से पास करते हैं ताकि वो आपस में फिर से क्लम्प ना हो, दैट्स व्हाई वी यूज सेकंड स्टेज होमोजेनाइजेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर टू फिगर्स डिपिक्टिंग वन स्टेज होमोजेनाइजेशन एंड टू स्टेज होमोजेनाइजेशन। सो इन वन स्टेज होमोजेनाइजेशन यू कैन सी दैट मिल्क यहाँ से, आपका मिल्क यहाँ से आया, ओके, और नैरो गैप से पास होके वो यहाँ से निकल गया बाहर, ओके। मिल्क आया, यहाँ पे आप जूम इसका एरिया दिखा है यहाँ पे, ओके। सो यू कैन सी हियर milk is passed through a narrow slit gap and milk fat globules get disrupted into a smaller ones, okay, minute fat globules you can observe here, which having the fat globule size below 2 micron, diameter of the fat globule below
2 micron. So this is the one stage. So this one depict this one, 2 is a wall sheet, and 3 is a hydraulic, sorry, 3 is a seat, 2 is the impact ring, and 1 is the forcer. This one is the forcer, 2 is the impact ring, and third one is the seat, and this 4 one is the hydraulic actuator. तो ये प्रेशर जनरेट करने के लिए काम में आता है. So you can see here that after first stage, the tendency of hydrolevels to clump each other. So आप यहाँ observe कर सकते हो. Here you can see that there is a clump formation after first stage. After first stage, there is a clump formation or a cluster formation, which may or may not be desirable in certain instances. But after second stage, you can see that there is no clump formation, which is desirable in some cases. Okay, it's the difference between a first stage homogenization and a second stage. In first homogenization, there will be chances of cluster formation, while in case of second stage, you won't observe any kind of cluster formation. So in two-stage homogenization, you can see that there are two type of walls. This is the first one, this is the second one. This is the first stage, this is the second stage. The principle is same, working is same, only the pressure difference will be the pressure. यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पे थोड़ा कम प्रेशर होगा. फर्स्ट केस में कितना होगा, 2500 होगा. सेकंड वाले में कितना होगा, 500 psi. In first case it will be 2500 psi. Second case it will be 500 psi. So second stage का यही एक ऑब्जेक्टिव होता है कि it won't allow cluster formation. It won't allow cluster formation. तो homogenization की बेसिकली टू टाइप्स है, सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन एंड टू स्टेज होमोजेनाइजेशन. सिंगल स्टेज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है कि जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो, एंड प्रोडक्ट डिमांडिंग अ हाई विस्कोसिटी. और टू स्टेज कहाँ पे हम करते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट्स विद हाई फैट कंटेंट एंड वेयर हाई होमोजेनाइजेशन एफिशिएंसी इज डिजायर्ड. उस केस में हम यूज करते हैं टू स्टेज होमोजेनाइजेशन. देन homogenizer walls. Okay, actually it is called as the heart of the homogenizer. जहाँ पे एक्चुअल में मिल्क का डिस्ट्रप्शन हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है एक्चुअल में एक वॉल में. ओके, हो रहा है एक्चुअली एक वॉल में. देयर आर डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ अ वॉल. यू कैन सी हियर, दिस वन इज द conical shape, this one is the simple shape, this one is the conical shape with grooved wall face, this one is the wall with breaker ring. So there are different designs of a homogenizer, and इस walls को हम कहते हैं heart of the homogenizer, because यही एक डिवाइस होता है, यही एक पार्ट होता है जो एक्चुअल में इफेक्ट करता है homogenizer को. Okay, it causes homogenization of the fat globules. So generally homogenizer में poppet type of walls यूज करते हैं. कौन से यूज करते हैं, poppet type of walls हम यूज करते हैं. सब में आप गैप को ऑब्जर्व कर सकते हो. यू कैन सी दैट गैप, यहाँ पे मिल्क आएगा और यहाँ से गुजरेगा. ये वाला पार्ट तो पूरा सॉलिड पार्ट होता है, मेटल का बना होता है, और जनरली इसका मेटल होता है स्टेलाइट करके. स्टेलाइट इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है स्टेलाइट का. पॉपेट टाइप वॉल हम इसे कहते हैं, और इनका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है स्टेलाइट. ये बहुत ही हार्ड एक मेटल होता है स्टेलाइट. ओके, जिससे यहाँ पे इसमें कोई टेयर एंड वेयर नहीं होता. अगर इसमें टेयर एंड वेयर आ गया तो फिर हमसे इसको क्या करना, हमको इसको क्या करना पड़ता है, इसको ग्राउंड करना होता है या इसको चेंज करना होता है. So here you can see the different designs of the shapes of the homogenizer wall. तो आप मेटल कंस्ट्रक्शन देख सकते हो कि स्टेलाइट यूज होता है एक तो, मोनेल मेटल और स्टेनलेस स्टील. तो ये बहुत हार्ड होता है. मोनेल स्टील मेटल भी हम यूज करते हैं और स्टेनलेस स्टील भी हम यूज करते हैं. तो सैनिटरी टाइप ऑफ होमोजेनाइजर में चाहिए होते हैं हमारी इंडस्ट्री में. आपको पता है व्हाट इज बाय सैनिटरी, व्हाट आर द सैनिटरी मेजर्स ऑफ द डेयरी इक्विपमेंट. तो सेम प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं. सारे के सारे जो होमोजेनाइजर होते हैं वो
सैनिटरी फीचर्स के ही होते हैं. They are kind of sanitary homogenizers or pumps. So homogenizer is basically a positive displacement pump. Walls are subjected to wear and tear due to velocity and pressure of the fluid. तो यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है